सो हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल द स्काउट गाय। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास है कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स एंड मैं करने वाला हूँ इनका रिव्यू। एंड मैं ये वीडियो उनके लिए भी बनाना चाह रहा था जो कंफ्यूज्ड हैं अगर वो स्विच करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड टू एप्पल में, या फिर इफ़ दे हैव ऑलरेडी स्विच टू एनी एप्पल प्रोडक्ट्स एंड दे आर कंफ्यूज दैट इफ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड फाइंड आउट दैट व्हाट्स राइट फॉर यू। सो गाइज, दिस इज़ iPhone 12 एंड ये मेरा सबसे पहला परचेज था एप्पल प्रोडक्ट में। एंड मैंने स्विच किया था OnePlus 7 Pro से iPhone 12 में। एंड द मेन रीज़न टू स्विच फ्रॉम OnePlus 7 Pro to iPhone 12 was the camera quality, because I travel a lot, so I take a lot of picture and shoot a lot of videos that I post on my social media account. In fact, for YouTube videos, like right now I'm shooting this video from my iPhone 12, so video is very top notch. Like मेरे को उसमें कोई problem नहीं आता है. The quality is very crisp and it's very good and it's on point. So color changes कुछ नहीं रहते हैं. Like it's all on the point. And that was the main reason. So I'm very happy with the result of this iPhone 12. And this was my first purchase. So it gave me a boost or say motivation to buy another product, because मेरे को ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा. सो आई थॉट इफ़ ये फ़ोन इतना अच्छा है तो व्हाट, लेट्स लाइक चेक देयर अदर प्रोडक्ट्स. सो लेट्स सी कि मैंने दूसरा क्या प्रोडक्ट लिया है. सो गाइज, दिस वाज माय सेकंड प्रोडक्ट फ्रॉम एप्पल एंड इट्स एन एप्पल एयरपॉड्स थर्ड जनरेशन. एंड again, I was amazed with the sound quality of this AirPods. So actually मैं इससे पहले यूज़ कर रहा था बोट्स ईयरबड्स. लाइक बोट्स का कोई मॉडल था मेरे पास. सो आई थॉट दैट द क्वालिटी वाज गुड ऑन दैट ईयरफोन also. But once I like bought this and I started using this earbuds this AirPods, so I was amazed. Like the sound quality is so good. Like I mean, you can't compare it with other brands. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक अगर आप जिम करते हो, वर्कआउट करते हो एंड स्वेट होता है, तो उसके कारण आप ये देखते होगे कि लाइक ईयरफोन या फिर ईयरबड्स जो स्लिप करके कान से निकल जाते हैं. बट दिस वन इट हैज़ अ वेरी गुड ग्रिप, सो ये जल्दी कान से स्लिप करके गिरता नहीं है. एंड अदर थिंग इज़ कि इसका बैटरी बैकअप इज वेरी गुड. लाइक एक चार्ज में एयरपॉड से आपको दे देता है अराउंड 4 to 5 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ. एंड इसका केस आपको 4 बार चार्ज कर सकता है आपके एयरपॉड्स को. एंड ये केस चार्ज करने में लगता है अराउंड 2.5 आवर्स. सो 2.5 आवर्स इज़ गुड. एंड इनफैक्ट द एयरपॉड्स लाइक अगर डिस्चार्ज हो गए तो वो 5 मिनट के अंदर अराउंड 30 to 40% चार्ज हो जाते हैं. सो यू कैन यूज़ देम अगेन. सो I'm very happy with the results and I don't regret buying this AirPods. So guys, this is my third purchase from Apple and it's an iWatch Series 7. ये 45mm का watch है. And again, this watch is also top notch. Like इसके size अच्छा खासा बड़ा है बाकी compared to other smart watches, because it's a 45mm first of all, and the screen, like the OLED screen, it's very good. Like you won't feel any problem taking this watch in the sunlight. आपको फिर भी बहुत अच्छे से टाइम या फिर जो भी चीज़ आप देखना चाहते हो देख सकते हो. इनफैक्ट यू वांट टू टेक्स्ट समवन एंड during the very harsh sunlight, still you will be able to use this iWatch very nicely. Now the reason I bought this was like, I don't know. I just bought this iWatch because मेरे को लेना था, because I was into the ecosystem and I thought why not to buy this and see कि ये कैसा काम करता है. And it worked very nicely. Like calls लेना हो, WhatsApp पे मैसेज रिप्लाई करना हो and you don't have a phone with you, you can do that very easily with this iWatch. And it can give you around 1.5 day of battery life if you use it with always on display and full brightness. And if you don't use that, it can give you 2 days battery life easy. Now charging is around 2 to 2.5 hours of this iWatch. And again आपको डिब्बे में just एक केबल मिलेगा, so you need to buy a brick, charging brick. So make sure if you are going to buy this one or any Apple product right now in the market, you will have to buy a brick.
So this was my third purchase from Apple. So guys, this is the latest and last product that I've purchased till date from Apple, and it's a MacBook Air. It's the base model, and I purchased this in gold color, and it works very fine, very smooth. I use this for my video editing or some coding, and it works very nicely, you know, very smooth, no lags. I've faced no lags. Like अगर कोई चाह रहे हैं मैं अपने laptop switch करना and they want to try any Apple product, so I will suggest कि वो MacBook ले सकते हैं, the base model also. They don't need to buy the higher or pro version of this MacBook. ये अभी सेल में भी चल रहा है Amazon पे, तो I will, you know, give the link in the description from where you can buy this product. And yeah, so this MacBook is working very nicely. My sole purpose is for the video editing and coding, and it works very smoothly, so there is no problem with that. I have no regret buying this product, and even I don't have any complaint. The battery backup is superb, guys, on this MacBook. So yeah, that's a wrap up for this video, and I hope this video was helpful for you and you can make a decision now very nicely. And my overview will be on this, that I'm very happy with my Apple ecosystem, and I'm not going to change from my Apple to Android now, that's for sure. And yeah, that's a wrap up for video. See you in the next video.